Okay. So, hi, evening, friends. Evening, everybody, bache. Pretty well. I'm Dr. Sushant Soni, MBBS MAMC, MD Pathology, Resident Hemat-Oncology, AIMS Delhi. Now, this is a special session. This is a special session in which we will be having talk with toppers. And today with us will be Dr. Purvi. So, I guess we are just waiting for her to join in, and as soon as we does, we will be starting the session. She has joined in. Hi, evening, Hi, Purvi. sir. Yeah, Hi, sir. for a second I got a heart attack कि नेट चला गया ये आने नहीं वाली. नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता. Kidding. So, firstly, to everybody, bache. Firstly, especially to Purvi, heartiest congratulations from my side. The hard work pays off, and you have actually proved it. No Thank you. doubt about it. Yeah, no doubt. For the others, Purvi is not only a student but also a close friend and a junior and everything. So, Purvi, firstly, tell us about yourself. Tell us about yourself. First of all, thank you so much, sir, for all this cute gesture. And myself, now Dr. Purvi Kachwaha, and I completed my MBBS from Kazakhstan, Salman Medical University. Okay. And I gave this FMG. So, सबसे पहले, I know you can't stop smiling, and it's a beautiful result, obviously. So, the क्या strategy थी पूर्वी? I guess this was the first paper that you gave. So, what was your strategy? क्या सोचा था कि मुझे निकालना ही है? How did you start working towards that goal? क्या सोचा था? And before you start answering, bache, for everybody, feel comfortable to ask your queries or ask whatsoever you wish from Purvi. I mean, she's a batao. Sir, strategy was कि निकालना ही है because I was prepared for this December FMG. And I started from January. Okay. And after COVID, something happened, and we all gone something like depressed and all. But when I got to know you and Unacademy platform, then I started with all my confidence, and I gathered up myself again, and I just looked up for this exam only कि December है निकालना है. So तुमने focused तरीके से, मतलब if I have to ask you this कि focused तरीके से तुमने Unacademy पे जब पढ़ाई शुरू करा, how many months did you have before the December paper? Seriously, 5 to 6. 5 to 6 months. So in 6 months, so this is actually a very strong statement for the students who will be giving the June FMG exam, because I guess you guys have exactly 6 months left before the paper. So क्या strategy थी पूर्वी तुम्हारी? I mean, there are two ways to study. First is कि मैं पूरे 19 subjects पढ़ के जाऊंगी. सेकंड इज कि मैं 10-12 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के जाऊंगी, बाकी 5-6 राम भरोसे छोड़ दूंगी, समथिंग लाइक दैट. व्हाट विल यू सजेस्ट? I would suggest whatever we do, it would be perfect first with theory, and after that, as much as you should solve MCQs. Okay, so सबसे पहले tell me this, did you finish all 19 subjects? Yeah, did you leave a few for your paper? Sir, honestly speaking, in 6 months, no one can complete it all 19 subjects. But I just go through them from just high yield points. Okay. But the main subject like patho, micro, I gave them more like You more. give more. So if I can divide your strategy कि जितने high yield हम लोगों के 12 subjects हैं, उनको you did them in extensive detail. Yes. जो माइनर सब्जेक्ट्स थे या जिनमें तुम्हें लग रहा था कि टाइम मेरे पास थोड़ा कम है बिकॉज इट्स 6 months, यू चूज देम फ्रॉम द लाइटर सीरीज, दैट इज या तो उनका हाई यील्ड डिस्कशन देखा या हाई यील्ड डिस्कशन देखा या क्रैश कोर्स देखा. So I guess this is again a strong statement for the students, बच्चे, in the sense that Unacademy is the only platform जिसमें तुम्हें 3 different moods मिल रहे हैं.
Actually, need strategies to how should one solve 100% those. We'll discuss everything today. And best part is we have a student who is going through. See, there might come a slight difference between my thought process and yours, but with Purvi as a moderator, wo wala thought process that will act as a bridge. देखो, primary point of concern that she has told us is कि 19 subjects करने हैं. You cannot afford to leave a subject because the paper is unpredictable. You cannot do कि let me leave anesthesia or ortho and stuff. हो सकता है उससे ज़्यादा questions आ जाए. Firstly, secondly, the app gives you the advantage that at the same cost you are getting the full course, a moderated version of the same and the high yield crash course. तो जो subjects तुमने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं उनको उनको फटाफट रिवाइज करने के लिए क्रैश कोर्स कर सकते हैं. मेजर सब्जेक्ट्स का तो पूरा कोर्स करना ही करना है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट. एंड द शॉर्टर सब्जेक्ट्स, इन केस लेस टाइम इज देयर, you can again do it from the comprehensive or a high yield points of the subject. Next, so सबसे पहले पूर्वी, the first question that I have for you is there any difference between live classes versus recorded? Yes, of course. A huge difference with live is we can solve our doubt hand to hand. So with me, it's a bad habit or no? I think you know it because without solving a doubt, I can't sleep. I know. So live is best because hand to hand we can get up. So live is best. Okay. Firstly, so and secondly, I'll add one more thing in the sense that अगर live class चल रही है, देखो अगर हमें movie actors को भी Netflix भी देखना है 6 घंटे 8 घंटे, it's not possible to do watch it 6 months. अगर faculty तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, he or she is cracking jokes with you, is giving you attention, it will be slightly easier to sit for those 6 hours. It will not be comfortable. I mean, there's no way it is not easy to sit on phone. I mean, फोन को कंटिन्यूअसली 6 से 8 घंटे देखते हुए इट इज नॉट इजी. फोन पे तुमने सीरीज देखना शुरू करा है या अभी फोन देखने का मन भी नहीं है? I had a talk with one of the students in the sense कि he told me कि सर अब फोन देखने का तो मन भी नहीं है, इतना सारा हमने लेक्चर्स ही देख लिए कि आईज आर कंटिन्यूअसली वाटरिंग. बट बच्चे थिंक ऑफ इट एज कि लाइव क्लासेस में अगर हम लोगों को इतना प्रॉब्लम्स हुआ, रिकॉर्डेड तो आई डोंट थिंक कि देख भी पाते कि इतनी डेडिकेशन के साथ. It's saying speed is a advantage, but when we can solve a doubt ना, so we can have an confident कि हाँ ये डाउट क्लियर हो गया, अब मैं आगे चलता हूँ. अगर आप स्पीड करके देख भी लो, अगर बीच में डाउट आ गया तो नाउ यू हैव टू वरी कि अब मेरा डाउट कैसे सॉल्व करूँ या सर कैसे कर सकते. तो लाइव इज द बेस्ट. इसमें एक चीज अक्षय हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर तुमने एक बार लाइव क्लास अटेंड कर ली है and if you want to revise the same, then you can modulate the speed and do the revision by the crash course or watching the same lecture at 2x. Next, I guess the parents are very, very proud. They have a huge brother and all joined this. Okay. Yeah, heartiest congratulations to the whole family from personally my side. My whole family is in this chat. Okay. So like Nina, we all are same. नहीं यार, this is actually a very proud day. See, as parents, I guess सबसे अच्छा लगता है कि बिटिया हमारी डॉक्टर बन गई है and she will be helping out people and treating everybody. No doubt. So tell me this. What was your study schedule like? कितने घंटे पढ़ती थी? कितने मतलब मॉर्निंग में ज्यादा था, रात में ज्यादा पढ़ती थी, कैसे करते थे? मैंने सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सारे स्केड्यूल ट्राई कर लिए and I found out one best one ki early morning studies best. Okay. No disturbance and full of confidence and concentration. Okay. So morning time was your most productive time. तो इस चीज को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें कोई टफर सब्जेक्ट पढ़ना है, then we will start with that during morning, and जैसे शाम होती रहेगी our mind will try to get fatigued. So now Ankit has actually asked a very valid question: how to counter fatigue. So did you study only one subject in one day? पूर्वी subject mix करती थी, क्या करती थी?
just make one schedule कि मेरे को आज दिन में ये सब्जेक्ट करना है, इतने घंटे पैथो है, इतने माइक्रो है, क्योंकि we can't do one subject because one threshold is there in our brain, फिर वो जाना बंद कर देता है अंदर. So for me it worked कि मैंने 2-3 सब्जेक्ट साथ में किए एक दिन. Okay, so two things that she has told us is make a schedule. But nothing absolutely replaces making the schedule. So for the students who are giving this June FMG, I know अगर result थोड़ा सा गड़बड़ हुआ दिसंबर का, तुमने पेपर दिया, result गड़बड़ हुआ, doesn't matter. Give yourself 3-4 days, cry your heart out, vent out your frustration, but you will have to start. And when you start, first start with making a schedule, because every topper, I guess this is my 6th or 7th interview for today, but every topper is telling us one thing consistently: make a schedule and stick to it, make a realistic schedule. दूसरा, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट नहीं करना है, उससे फटीग ज्यादा आता है कि अगर सुबह से लेके शाम तक मैं पैथी कर रहा हूँ या सुबह से लेके शाम तक मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा फटीग आएगा. ऑल्टरनेट रिलेटेड सब्जेक्ट्स, जैसे पैथोलॉजी में तुमने लंग्स पढ़ा है तो उसके बाद मेडिसिन में लंग्स पढ़ लो, मेडिसिन में लंग्स कर लो, या समथिंग लाइक दैट. दैट विल बी अ इंटीग्रेटेड अप्रोच आल्सो. नेक्स्ट, अक्षय, बच्चे कंटेंट वाइज, अच्छा नाउ बिफोर आई गिव माय इनपुट, पूर्वी विल लाइक टू आस्क यू, तुमने जैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करा, तो पैथ के लिए ऐसा सोचा था कि आज मैंने 5 घंटे पढ़ लिया तो छोड़ देती हूँ, बहुत हो गया, या टॉपिक खत्म करती थी वो वाला? टॉपिक खत्म किया, नहीं तो कल हेडेक देता है वो सेम टॉपिक, सो आई फिनिश इट ऑन द सेम डे, चाहे फिर कितना भी टाइम दे. परफेक्ट. तो अक्षय, इट इज ऑलवेज अबाउट कंटेंट वाइज. दोस्त, 5 घंटे खत्म हो गए तो हम आवर वाइज नहीं कर सकते कि अब इस चीज को हम अगली बार अगले दिन कर लेंगे. नहीं, इट हैज टू बी कंटेंट वाइज कि एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होगा एंड उसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट वन. Now, Shri Krishna, Vache, you have a very cute query ki why is Unacademy and Prep, like we are sister companies or brother companies to be more exact, why are we focused more on FMG than NEET PG or Next? Not at all, those. This I can actually very frankly say, we are the only two platforms which give different weightage, different material, different content, and different question banks for the two. FMG का जो क्वेश्चन बैंक एंड कंटेंट है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नीट पीजी और नेक्स्ट. फर्स्टली, सेकेंडली इट वुड बाय चांस हैव बीन कि तुमने जो सेशंस देखे वो एफएमजी ओरिएंटेड थे, बट विच एवर कंटेंट एंड सेशंस आर बीइंग स्टार्टेड, like with respect to FMG, I can tell you, we started a batch on 14th December. We started with anatomy. उसके बाद we'll go to physiology. This is for the June FMG students. Next, the second batch of this will be starting on 24th December. I am on the academic team. I myself said कि for the students जिनका result थोड़ा सा गड़बड़ गया, they will need 2 to 3 days to prepare, to get their mindset right and then start preparation. So second batch is from here. For NEET PG, we have started our, for the next, let us first target next. But we started our first batch on 12th December. This will be getting over by May, June. There are actually two batches, one is morning and one is evening. Next, totally different. Next, for the INI, that is Institute of National Importance, the mid-year paper, May के लिए there is a totally separate batch. And for the NEET PG, that is the one which will be occurring in March or April, that March NEET PG 2021, there is a separate crash course. So on the same subscription, I mean, Shri Krishna, that was for you, Bache. For the same subscription and the same target, you will have focused batches and focused subjects for catered to your particular exam. Next point. Now, Purvi, Bache, the schedule. So, how to make the schedule? Okay. पहले major subjects करे, minor करे, कैसा करा? First do major, because if you do major, then now you can be lightheaded. कि अब मैंने heavy subject, I have completed heavy subjects, now only left is minor subjects. So थोड़ा tension कम हो जाता है. तो first go with, and how to make schedule is according to it's
differ according to person. Okay. Like I make it like on I just stick on my wall like green and red. Green side my positive subjects and red side my negative subjects. So मैं ऐसे करती थी कि ग्रीन वालों के सिर्फ एमसीक्यू की थ्योरी मुझे आती है, इट्स माय परफेक्ट जोन। और जो मेरा रेड जोन होता था उसकी मैं पहले थ्योरी अच्छे से की, लाइव क्लास देख ली, सब कुछ देख लिया, फिर एमसीक्यू, तो फिर वो रेड भी जब ग्रीन होता जाता था तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। See, so basic thing is, I guess, being kind. I know you are kind, Puvi, no doubt about that. But you have not been that kind to me. If I remember correctly, somebody had promised me that a treat will be given wo ab tak gayab hai, but we'll have a talk about that later, no doubt. So most important thing is being positive minded. इन द सेंस कि यू कैन नॉट फोकस ऑन द नेगेटिविटी कि यार मेरे पेपर में, मेरा पिछले पेपर में ये गड़बड़ हो गया, मेरा दिसंबर वाला पेपर बिगड़ गया, दोबारा ऐसा हो गया तो अब की बार गड़बड़ हुआ तो सीधा नेक्स्ट में आ जाएंगे. डू नॉट focus on the negativities. Negativity is around us, but we have to just focus on our positive things. True. And another is कि कितने बार रिवाइज करा. Tim, those who are doing internship will give next or NEET in 2022. बच्चे, you guys जिनके internship खत्म हो गई, you will be giving NEET only. 2022 में I know ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला क्वेश्चन है, but जो भी होगा, paper will be there in March only. So whether you will be giving NEET or next, that will not matter too much. Paper will be there in March only, firstly. And secondly, the integrated questions NEET में भी आ रहे हैं और next में भी. So दोनों का same रहेगा. Next, I am third year. Which platform will be best? Purvi, you answer this. Student is in third year right now, and he will fall under the gambit of next. बच्चे next देना है उसको. So recorded sessions 2 साल बैठ के देख सकते हैं, या because on Unacademy I can safely say कि 1 साल हम लोग पूरा theory पढ़ाएंगे, उसके बाद the revision and the crash courses will start. That is the thought process that we have for next. So recorded 1.5-2 साल देखना possible है कि live classes काफी better रहेंगी. For them third year and second year students, अगर उनकी classes है, if they are in their schedule to their classes, so it's not possible to attend every live classes. So recorded will be best, and after that, when they will revise it, when MCQ marathon and like that classes are on Unacademy, then go for live. Go for live. So इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि अगर जैसे 4 बजे तक कॉलेज खत्म हो रहा है या 5 बजे तक खत्म हो रहा है, we can do the evening batch of the same, because there are 2 batches. Like next one will be the morning batch and the other will be the evening batch. So as you said कि live classes में तुम्हारे doubts solve हो रहे हैं. So मोक्ष बच्चे, evening batches, you can attend the evening batch of the classes. सैटरडे संडे है ही, प्लस जो क्लास मिस होगी उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकता है. देख, इफ यू विल टोटली रिलाई ऑन द फैक्ट कि मैं सिर्फ रिकॉर्डेड बाद में देख लूंगा, वो बात कभी आएगा नहीं. आई मीन, डिड यू एवर फील दैट कि अगर हम जिस चीज को छोड़ देते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल बात आता है? मेरे साथ हुआ था, बहुत सारा इकट्ठा कर लिया मैंने, बाद में देखूंगी एंड जस्ट आई डिड ऑल दैट हेडेक की बहुत सारा इकट्ठा हो गया. फिर रियलाइज हुआ कि go with live, just complete it hand to hand and finish it. Finish it side by side. Okay. Shri Krishna बच्चे, there is a batch for next 2023 also. 2022 का खत्म करके, as soon as we will be over with that, you start attending the major classes for 2022, and after that we will make a schedule for 2023. Absolutely, don't worry about it. For the next one, you कुछ नहीं करना है. I'm writing my Telegram ID. You can simply message me on Telegram. I'll send you the whole schedule. कुछ नहीं, if you just search Sushant Soni Pathology, it will come up. I am even giving you my personal WhatsApp. That's perfectly okay. I always do that. So you can send me a message, but give me some time to reply. That is obvious. Yes, it is tough to see recorded, as you'll have to make the schedule yourself.
बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए होती है रिकॉर्डेड के लिए, दोस्त, जो मुझ में तो नहीं है. देयर इज, आई मीन, आई कैन से दैट वेरी फ्रैंकली, रिकॉर्डेड देखने में जितनी हिम्मत चाहिए उससे काफी कम हिम्मत एक लाइव सेशन में लगती है, आई गेस. नेक्स्ट, सो what last thing, Purvi, what will you like to tell your juniors कि क्या करें क्या ना करें, because this is, I guess, do or die for them. June FMGE is their last exam, उसके बाद next आ जाएगा. What will you suggest? I would suggest first that positivity is must. Okay. Because one negative thought can destroy our whole day, and next day we will again with same thing. And so just if you get one negative thought, then talk with someone, like I talk with sir or I talk with my seniors. So I always like gather myself again and again. No doubt कि negativity आती है, बहुत बार मुझे भी हुआ यार कैसे करूँ क्या होगा, but just जो I just stick on my wall वो दिखता था, and just I saw on my green side, तो और यार बहुत सारे green कर लिए, अब तो कर लूँगी. So everybody has their potential, they know their potential, so just believe in yourself and just start it. Once you will start, then you will not. एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो अपने आप पाथ बनता जाएगा, is what you are saying. And जितना ज्यादा हो सके, especially for the June FMG students, बच्चे जितना ज्यादा हो सके do live classes. Live MCQs with all polls and all. Now, Manoj has asked about relationships and a personal question. I guess your family is there on that, so I'll take care of this query. So, should there be relationship should be there in between, because I could not concentrate. That's totally okay. Manoj, देखो बच्चे, relationship सोच समझ के नहीं किए जाते, हो जाते हैं. आई गेस आई कैन सेफली से दैट. तुम ये सोचोगे नहीं कि यार मुझे इस बंदी के साथ रिलेशनशिप करना है तो चलो मैं ट्राई मारना शुरू करता हूँ. किसी का दिल नहीं दुखाना है. आई मीन, डू नॉट हर्ट एनीबडी, डू नॉट गेट हर्ट योरसेल्फ, and priority should always and always be studies. Relationships should strengthen your study. It should not be a hampering factor. ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज ही फाइट हो रही है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि मतलब हम पढ़ाई से ध्यान हटा के we are more into sorting out stuff, as a result of which it is reducing our performance. वो नहीं करना है, especially for the June FMG students. But if you are a couple, remain a couple. If you are single, remain single. We will not alter our relationship status in these 5-6 months. एक भी दिन relationship के कारण हम waste नहीं करेंगे, especially in these last 6 months. I guess I can say that safely, and I'll not ask your input, especially because your family is there for me. So, done it, done it. So I guess last few words, anything that you would like to add before we end the session, and absolutely any other queries from the student side. रिवाइज कैसे करना है आफ्टर द क्लास? पूर्वी बच्चे, द क्वेश्चन इज रिवाइज कैसे करना है, इमीडिएटली आफ्टर द क्लास या उसके 1-2 दिन के बाद? नहीं, इफ यू विल डू आफ्टर 2 or 3 days, वो स्टार्टिंग से आपको वीडियो ही खोलना पड़ेगा. सो इफ आफ्टर जस्ट इफ यू सॉ अ वीडियो, देन जस्ट रिवाइज आफ्टर दैट. ट्रू. इसमें I still remember I used to have back-to-back classes from 10 to 12, 10:15 to 12:15. मैं हमेशा 20 मिनट पहले छोड़ता था because 12:15 was slightly late. I always used to end it by 11:15. You just ask, you just write 4 positions, which position you are in right now. So I always say that I am in clouds. You are in clouds. I agree. See, what being in clouds made all the difference, because think of it this way. 20 मिनट पहले बच्चे, my thought process for leaving was कुछ नहीं. I am not asking कि तुम 12:15 से 12:30 तक पढ़ो, नहीं. You study during my class time. PDF डाउनलोड करके सिर्फ वो PDF भी अगर नोट्स देख लोगे ना, you will remember it for longer. Next, Alok, it is perfectly okay, yaar. When I am feeling low or I am feeling sad, matlab I read a novel, watch Netflix or something like that. Everybody is different. Thing is, the only important thing is we should be stable enough कि हमारा फोकस जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे है, मस्ती करते हुए मस्ती पे है.
ये मत करना कि पढ़ते हुए मस्ती का सोचो और मस्ती करते हुए पढ़ाई का, क्योंकि ना पढ़ाई हो पाएगी ना मस्ती हो पाएगी. जस्ट डोंट डू दैट. उसके अलावा लाइफ सेट है. आगे का क्या प्लान पूर्वी? सेटिस्फाइड विद बीइंग एमबीबीएस या कुछ बड़ा सोचा है अभी, मतलब पीजी करनी? Satisfied with my hard work, but not satisfied with only MBBS. Okay, way to go. Okay. So, no doubt, bestest of luck for the whole future endeavors from my side. We have few questions coming up. My friend is doing MBBS and sometimes he gets confused. Chelsea, बच्चे अगर तुम उसके सामने खुद पढ़ोगे ना, in the sense that it is the company which always matters. I strongly believe in that. If we are in a company जहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं और हफ्ते में एक दिन पार्टी कर रहे हैं, I mean I was in that company, life works okay. इफ यू आर इन द कंपनी जो 5 दिन पार्टी कर रही है और एक दिन पढ़ रही है, तो हम लोग भी उसी थॉट प्रोसेस में जाते हैं. कुछ नहीं करना. जब भी थोड़ा सा भी लगे कि कमरे में बैठ के कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट इन सिटिंग इन माय रूम, जस्ट गो टू द लाइब्रेरी, see other people studying, sit with a cup of tea, coffee, wear your headphones, do something on the phone, start with a book, and everything will work out fine. Next, Priyan, बच्चे, you asked university versus entrance. यूनिवर्सिटी एग्जाम तो सबका क्लियर हो जाता है. पूर्वी, आज तक कभी किसी यूनिवर्सिटी पेपर में टप की है? नहीं. यूनिवर्सिटी तो सबका क्लियर हो जाता है, वेदर इट इज अ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट.